Hello friends, welcome back to Sneak Peek with Ash. So today's video is a very relaxed and chill video because in this video I'm going to share um, what I do to just take care of my skin. So basically today like I was feeling very like my skin was feeling very dry and not so good, so I just thought of doing my skincare routine. So it's very simple because I have a very sensitive dry skin. I don't use a lot of products, skincare products, because I'm not my skin is not susceptible to the very different kind of products. So I believe in using home made things. So basically I just apply some uh, turmeric and milk along with some फ्लावर. सो दैट इज़ घर का आटा जो ग्रीन होता है, दाल का आटा, वो उसमें हम लोग मिल्क एंड थोड़ा टर्मरिक ऐड करके वी कैन जस्ट मेक अ पेस्ट ऑफ इट एंड अप्लाई ऑन द फेस. So that works the best for me to get rid of all the dead skin, and then I just apply a peel off mask so that I feel refreshing and my skin breathes well. So I am doing after a long time because आलस आता है, like doing the skincare is really tiring, but yes, you should take care of your skin as much as possible. Then because in the long run you will see aging के जो भी effects होते हैं वो दिखने लगते हैं. So yes, so let's get started. First I'll apply the paste which I'm going to make, and I'll just show the ingredients to you all. And yeah, those who are having the skin issues such as dry skin, sensitive skin, you all can use this as a small help, because it really works. Trust me guys, it works miracles. I'm looking dull as of now, but you'll see how I look refreshed after I apply it. So chalo. Okay, so guys, the paste is ready. So I just added one tablespoon of milk in it and thoda sa pani, just so that it gets mixed well. But don't put too much of water, just to mix it well. And then the paste should be like this. It should be a medium paste, not too thick, not too thin. So it should be like that. So chalo, mix it well and then apply it on your face, and then just let it dry for 5 or 10 minutes. Then you can see the results after washing the face. So chalo, let's apply. I'll show you how you apply it. See, many people apply it with a spatula or a brush. I prefer hand because it's the best. So I have a dark circles because I have high index spectacles. So इसकी वजह से I have dark circles. And then this is the way I'm applying the paste हर जगह पे. The turmeric has healing properties. So जो भी मतलब damaged tissues होता है, so turmeric does that healing for you, and you feel very nice after you wash the face. Trust me guys, the results are amazing. This is not the first time I'm applying this paste. I've done this many times before, and every time I have applied, I have felt my skin has felt much better, and skin feels happy basically. So you have to treat your skin well. So let me know कि आप लोग क्या products use करते हो, because for me it's difficult to use other products क्योंकि skin sensitive है and allergic भी है बहुत सारे products से. So yeah, जो भी है ऐसा ही है.
You have to use home remedies to do whatever you want. So this is basically chana dal, turmeric and milk. बस तीन ही ingredients. Some people, we can also add honey to it, but मैंने नहीं डाला हुआ है. So honey also does a great job. And I guess like men also can apply this paste to your face so that you feel it's like a part of a skincare routine. So once in a while, 15 days or once a month, you can apply it and get all the dead skin removed. Because I had done facial twice in July, तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स यूज़ हुआ है एंड उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, like I literally did nothing, so I thought I should do it today and just show you all. चलो बस बहुत लगा लिया. So now waiting for 5 or 10 minutes until it gets a bit dry, and then I'll just wash my face and show you all. Till then just wait for the result. So मैंने face wash कर लिया है and you can see the results guys. So my skin has become soft like a cotton. I'm not kidding guys, milk is too effective. And yeah, so I just like this milky skin. तो यू कैन सी द रिजल्ट्स. बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे अभी एंड आई एम फीलिंग सुपर एनर्जाइज्ड एंड सुपर हैप्पी लाइक या बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई एम ग्लैड आई डिड दिस टुडे बिकॉज बहुत दिनों से आई वॉज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग और बहुत आलस आ रहा था डूइंग माई स्किन केयर. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ आई विल जस्ट अप्लाई अ पील ऑफ मास्क. सो ये छोटा पील ऑफ मास्क है मेरे पास, लाइक आई गॉट इट बिकॉज यूजुअली आई डोंट यूज़ एनीथिंग. तो ये अप्लाई करना है, लाइक ओनली हाफ ऑफ इट एंड देन आई शो यू द रिजल्ट. ओके, सो दिस ऑल्सो वर्क्स गुड ऑन माई स्किन, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस. बाकी लाइक इट्स योर चॉइस कौन सा मास्क यूज़ करना है आपको, और लाइक इट्स टोटली अप टू यू. सो चलो पील ऑफ मास्क अप्लाई करते हैं. सो आई जस्ट टेक हाफ ऑफ इट बिकॉज फेस इज़ छोटा. So उसके हिसाब से I'm taking it on hand only because that's the easiest way to apply this. Because do everything as per your convenience. कोई किसी वे में कर रहा है, so do whatever is convenient to you. For me this is convenient because I'm not good at such stuff, so जो भी convenient होता है मैं वो करती हूँ. Okay, I'll keep this here. So चलो. सी दिस इज़ नॉट मतलब ये मैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं कर रही हूँ. दिस इज़ जस्ट टू नॉट टू शो एनी वन बट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दैट गिव्स हैप्पीनेस टू योर सोल. सो कीप डूइंग थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी. बेसिकली द जो भी मेरा इंटेंशन है आपको ये बताना, लाइक स्किन केयर, स्किन पैम्परिंग, जो भी आप कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट फॉर एनी वन. सो लाइक मैं जब भी ये करती थी, लाइक आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी वन ना, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. सो एंड हमारे यहाँ पे नो वन डज टू मच, नो वन यूजेज अ लॉट ऑफ आउटसाइड प्रोडक्ट्स बिकॉज स्किन ख़राब हो जाती है इन द लॉन्ग रन. इफ यू वॉन्ट टू लाइक मेंटेन योर स्किन, डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. जो भी घर पे प्रोडक्ट्स है और जिसके अच्छे फ़ायदे हैं वो यूज़ करें, सो दैट इन द लॉन्ग रन यू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन बिकॉज वी आर ह्यूमन्स एंड एजिंग तो होनी ही है. लाइक आई एम 28, तो ऑब्वियसली माई स्किन इज़ एजिंग, तो वो ना हो. एंड टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, बेसिकली आई डोंट डू दिस फॉर एनी वन बट माई सेल्फ. This gives me happiness, so I like to feel good not only from outside but within. So outside जो happiness है ना, वो internal happiness से connected होता है. So जब मैं ये करूँगी, I'll get happy from within.
मोटिव यही होना चाहिए हमेशा। बालों में लग रहा है यार, ठीक है। आई थिंक आई एम डन। थोड़ा सा ही ठीक है बिकॉज सी एज आई एम अप्लाइंग दिस माई स्किन इज फीलिंग थोड़ा थोड़ा वो प्रोडक्ट एप्लीकेशन का होता ही है, एज आई टोल्ड सेंसिटिव स्किन, बट ये चलता है मुझे, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट टू सम एक्सटेंट। Now let it dry and then just peel off. हाँ, इस पे नहीं लगाना है बट स्टिल थोड़ा सा लगा सकते हैं। So 15 minutes are over and मैंने थोड़ा काम भी कर लिया तो चाय पी ली and as you can see the mask has dried a lot, so now we can just peel it off. बहुत ऐसा heaviness लग रहा है फेस पे, so I just want to get it peeled off. So चलो let's go. वाओ, मुझे बहुत मजा आता है। You can see. Okay, पूरा पील नहीं हो रहा है, so I just remove जो जो ड्राई हो चुका है and then बाकी का wash it off because I don't want to keep it more for a longer duration. Oops. ऐसा लग रहा है कि स्किन निकाला। निकल क्या हो रहा है? सो ओके, इतना ही ड्राइड अप था, so I just wash my face and then I'll show you. So I've washed my face now and you can see how my skin looks now. It's glowing and I feel refreshed, energetic. So you can just check out my face at the start of the video and now at the end of it you'll get to know the difference, what a small skincare routine does for you. It gives you an very different feeling from within. It makes you happy and re-energizes yourself. So I feel so happy and kick-started for the coming week. So this was a small skincare routine. The main purpose behind this video was there are a number of products available in market these days for the skincare, so you can use them if it suits you. But if you have not so good skin type like me, you can go for natural homemade products and those works miracles if used in a proper way. So just go for it because they are homemade, they won't have any side effects and you can just go for it. So yeah, this comes to an end and I'm now all ready to do some stuff. I feel great. So if you like this video, don't forget to hit the like button, share it with your friends, subscribe to the channel if you are new, and yeah, keep supporting like this, keep smiling, be happy, take care, bye bye, love you guys.